Good evening, friends. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Lama Fera Master Teacher, and a psychic. Today, I will talk about loving yourself with Reiki and mirror work. So, what is mirror work? मैंने हर बारी बहुत बारी मिरर वर्क के बारे में बताया है, मिरर हीलिंग के बारे में बताया है, इनर वर्क के बारे में बताया है. आज हम इसको रेकी से मिक्स करते हैं और एक डिफरेंट न्यू तरीका आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ. सो यू आर अ मिरर रिफ्लेक्टिंग अ नोबल फेस. दिस यूनिवर्स इज नॉट आउटसाइड ऑफ यू. लुक इनसाइड योरसेल्फ. एवरीथिंग दैट यू वांट, यू आर ऑलरेडी दैट. आप अपनी ही मिरर का प्रतिबिंब हैं. आपका जो फेस है, यूनिवर्स जो है बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है. अपने अंदर झांक कर देखिए, आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और वो सब आपके पास ऑलरेडी है. सो मैं इसमें आपको मिरर वर्क के बारे में बताने जा रही हूँ कि रेकी से हम मिरर वर्क कैसे अटैच कर सकते हैं और रेकी के थ्रू हम मिरर वर्क कैसे कर सकते हैं. रेकी के थ्रू मिरर वर्क बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से होता है. इट कुड बी द ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड or unhealed wounds from your past relationships. Whatever it is, know that you are carrying a toxic burden which had mastered your present and will influence your future greatly. It becomes a karmic issue deeply rooted in unhealed. Letting go is not very easy, but it becomes truly simple when you start to loving yourself. अपनी फिजिकल बॉडी से प्यार करिए, अपनी इनर सोल से प्यार करिए. मिरर वर्क, मिरर एक्सरसाइज एक मैजिकल टूल है. अब हम इसको करते कैसे हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिशन ऑफ लविंग योरसेल्फ. रेकी विद मिरर वर्क मेक्स द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्टर and aids in complete healing of all stressful past situations that had created your traumatic present. अब मैं आपको तरीका बताती हूँ. आपको क्या करना है? अ स्ट्रॉन्ग विल चाहिए आपको लेट गो करने की. बहुत ही मैंडेटरी है. अगर आप नहीं चाहते हैं कोई चीज़ लेट गो करना तो ये तरीका यूज़फुल नहीं है. आपको एक पर्सनल मिरर चाहिए, पॉकेट मिरर चाहिए, शीशा, या तो पर्सनल डायरी चाहिए या पेजेस चाहिए जिसमें आप अपने जर्नल्स लिखते हैं, इंसेंस स्टिक्स और सेज. अब बिगिन करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, क्लीन योर मिरर नीटली. Clear the space with a sage or incense stick. You can also invoke the angels to cleanse the mirror of any negative energy, or you can buy a new mirror personally for you. Take time to think of your past issues which you had been holding down for years. Draw a tabular column in your diary with 6 columns and 21 rows. Column का title रखना है past situation, people involved, emotions and feelings associated with the situation, body sensation and diseases you had after the past situation, affirmations, observations, how you feel each day after doing the let go process. Write down every detail of the situation and people involved in it in the diary and how you felt about it or reacted to it. Think about the bodily sensation you get when you think of it every time, and physical pains, discomfort, disease you have. Now you are ready to start. अब मेथड क्या है? After the cleansing process, draw a big power symbol on your 4 sides of the mirror. Then draw the mental healing symbol at the center of the mirror. Sit before the mirror and connect to your past situation with distant healing symbol. See yourself in the mirror and let out all your feelings about that past situation. It's okay if you cry or express your emotions strongly. Then ask yourself what benefit the past situation has given you over the years. Nothing but physical manifestation of diseases, discomforts, and block you from stepping into light. Are you willing to finally let go it with happiness? Act and visualize yourself reacting in a positive way that could have made the situation happy or better. Visualize yourself very happy and relieved. You can also do Ho'oponopono to help in letting go of all situations or people. Say to yourself, I love you, I accept you and cherish you. Invoke
the guardian angels and spirit guides to support your healing process and give Reiki to the mirror for as much as time you have been guided. After finishing it, draw a big power symbol and seal it. Thank the angel and spirit guides for supporting you with the healing process. Try to look at the mirror several times during the day and say, I love you. You are awesome. Alternatively, you can also do this with a small pocket mirror and carry it over to your workplace and look at it often and I say, I love you. Note down your observations in the diary regularly every day. Say goodbye to those past hurdles and say goodbye them to light your path. Please do try and share in your magical experience. Have a blessed life always. Love and light to you all. I'm Isha Pandey, Reiki Grandmaster. You can contact me in the description below. Contact details लिखी हुई हैं. Thank you so much.